Welcome to all of you on your favorite YouTube channel Maths Can Be Fun. In this video, I'm going to give the solution of exercise 8.1 chapter trigonometry NCERT. So let's start the video. It is most important for class 10th students. So let's question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Then determine sin A, cos A, sin C and cos C. So as I told you, trigonometry is totally based on right angle triangle. So first of all, we draw right angle triangle. Okay. So, and it's given in question also. In triangle ABC, in triangle A, B and C, right angled at B. So right angle at B. Okay. Then AB is equals to 24 centimeter. AB is equals to 24 centimeter. BC is equals to 7 centimeter. Is it clear? Then determine sin A, cos A, sin C, cos C. As we know, जैसा कि हम जानते हैं, the value of sin A with respect to this angle, हम इस angle के point of view से देखेंगे तो it is perpendicular, it is base and its hypotenuse which is not given. ठीक है, AC is the hypotenuse in triangle ABC, जिसमें हमें hypotenuse AC की value given नहीं है. So what we will do? First of all, we find the value of AC by Pythagoras theorem. And what is Pythagoras theorem? Square of hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and base as well. Okay, so just see the solution. In triangle ABC, by Pythagoras theorem, okay. And what is the Pythagoras theorem? AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, अगर आपको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये लिख लेंगे, देन उसके बाद में आप इसको रिप्लेस कराएंगे. ओके, बट अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे इट्स बेटर. नाउ AC square, we need to find the value of AC, so we put as it is AC. हमें AC की वैल्यू चाहिए. Then AB square, we replace the value of AB is 24 centimeter, so we replace AB by 24 centimeter. AB has a square, so we take a square of 24 as well. Okay, plus BC, the value of BC is 7 centimeter. Again BC has a square, so we take a square on 7 centimeter also. So let's AC square is equals to 24 square. The square of 24 is 576 centimeter square, plus square of 7 centimeter is 49 centimeter square. Then we add square, AC square is equals to 576 plus 49, 9 plus 6 is 5, carry over 1, 8, 4, 12, 2, carry 1, it's become 625 centimeters square. Then we remove the square and take a square root on another side. So AC is equals to under root 625 centimeter square. Then AC is equals to 25 centimeter. Why? Because we know that the square of 25 is 625 or square root of 625 is 25. So the value of AC we got 25 centimeter. Okay, now it's easy. अब हम इसकी वैल्यूज को जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है हम फाइंड कर लेंगे. So now sin A, okay, means हम एंगल A के रिस्पेक्ट में वैल्यूज देखेंगे. यार एंगल A के रिस्पेक्ट में देखते तो इट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज नेवर चेंज. ओके, एंड इट इज बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A. So sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is BC. BC upon hypotenuse is AC. The value of BC is 7 centimeter upon the value of AC is 25 centimeter.
and we know that it is ratio, and ratio has no unit, so we cut the centimeters, so it's come 7 by 25. So the value of sine A is 7 by 25. Now similarly cos A, so cos A is equals to base upon hypotenuse, which is equals to AB upon AC. The value of AB is 24 centimeter upon 25 centimeter. Again we cut the centimeters, so our answer is 24 by 25. So 24 by 25 is the value of cos A, whereas the value of sine A is 7 by 25. Next, sine C. So I'm going to write the value of sine C here. Okay, sine C. So what we will do? We write the values with respect to this angle sin C, means angle C के respect में अब हम values देखेंगे. So this base become perpendicular now. Why? Because we know that the side opposite to theta angle, and here theta is sin C, theta is C. So the side opposite to theta angle is perpendicular, hypotenuse never change, and the third one is base. So value of sine C, value of sine C is perpendicular upon base, so we write the perpendicular up, sorry, it's hypotenuse. Okay, perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is here AB, so AB upon AC, which is equals to, I'm going to write the answer directly, not in centimeters. So AB upon AC is 24 by 25. Okay, similarly cos C is equals to base upon hypotenuse. In this case, with respect to C, angle C, base is BC, so BC upon AC is equals to 7 by 25. This is the actual solution. Is it clear? Note down. Then we move to the question number second. Question number 2. In figure 8.13, it is figure 8.13 in NCERT, find tan P minus cot R. Okay, so tan P, tan is equals to base up, sorry, tan is equals to perpendicular upon base, tan is equals to perpendicular upon base. अगर हम इस रिस्पेक्ट एंगल P के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस इज हेयर. ओके, but perpendicular is not here. So first of all we find the perpendicular by Pythagoras theorem. So let's see the solution. Solution: in triangle PQR, in triangle PQR, PR square is equals to PQ square plus QR square. Okay, and I forget to mention Pythagoras theorem, so I'm going to write by Pythagoras theorem. Okay, now so the value of PR is 13 centimeter. 13 centimeter square is equals to value of PQ is 12 centimeter, again square, plus QR, we need to find the value of QR. Then square of 13 is, okay, one more thing, if you don't know the square of any number, means agar aapko squares nahi learn hai, okay, so just see what will you do. It's 13 centimeter square minus 12 centimeter square, but squares learn hone chahiye, ye zaruri hai. Okay, you must to learn the squares. So 13 centimeter square minus 12 centimeter square, we apply an identity here. A square minus B square is A plus B, okay, and A minus B, A plus B and A minus B. Is equals to QR square. Now then 13 and 12 is 25 centimeter square minus, sorry, multiply by, and it is 1 centimeter.
which is equals to QR square. Then 25 ones are 25 centimeter makes centimeter square is equals to QR square. Remove the square and take a square root. The square root of 25 is 5 and centimeters square root is centimeter, which is equals to QR. Means the value of QR is 5 centimeter. Okay. Now we find the value of tan P first. So the value of tan P is QR upon PQ with respect to angle P. इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा. ओके. हाइपोटेन्यूज की बात यहां पे इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि tan और cot दोनों के जब हम रेशियोज लिखते हैं तो वहां पर हाइपोटेन्यूज नहीं आता. सो tan P is equals to perpendicular upon base. Perpendicular is QR upon base is PQ, which is equals to 5 by 12. Okay. Now cot R. अब cot R की वैल्यू हम एंगल R के रिस्पेक्ट में देखेंगे. So this perpendicular become, sorry, this base become perpendicular now. Okay. Angle R के रिस्पेक्ट में. Why? Because it is the opposite side of the angle R. And the third one is base. Okay. Cot R is equals to base upon perpendicular. Base is QR upon perpendicular is PQ. So the value of QR is 5 by 12. So what we need to find, हमें क्या find करना था? Tan P minus cot R. So value of tan P is 5 by 12 minus cot R is also 5 by 12. So when we subtract 5 by 12 from 5 by 12, so we cut it, then we get 0. Okay. So the value of tan P minus cot R is 0. Just see the solution, then we will move to the question number 3. Question number 3. If sin A is equals to 3 by 4, calculate cos A, tan A. So let's see the solution. So first of all, we draw triangle. Okay. And I'm going to draw A here, A, B and C. Okay. Then sin A is equals to, what is the value of sin A? Sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse, which is equals to, अगर हम इस एंगल A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो BC is perpendicular, AC is hypotenuse and AB is base. Okay. So sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular की लेंथ क्या है? BC. So BC is perpendicular upon hypotenuse is AC. And it's given 3 by 4. 3 by 4 is given. Okay. Now we measure length in unit. Length has unit. Length में unit होनी चाहिए. So what we will do? We will take K here as unit. Okay. So BC is 3K, whereas AC is 4K. Then again same problem. Find AB and only one theorem, Pythagoras theorem. So in triangle ABC by Pythagoras theorem. And what is Pythagoras theorem? AC square is equals to BC square plus AB square. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. The value of AC is 4K. So we put a square is equals to again 3K square plus AB square. It is 4 4 just 16K square, which is equals to, yes, 3 3 are 9K square plus AB square. Now 16K square minus 9K square is equals to AB square. Then 16 minus 9 is 7. 7K square is equals to AB square. Okay. Remove the square and take a square root. Now K square root is K. K
स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, एंड 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो रूट 7 जो है वो रूट में ही रहेगा, सो 7 जो है वो रूट में ही रहेगा. सो AB is equals to root 7k. Okay, the value of AB we get root 7k. Okay, wow, k. Okay, great. Now, so calculate cos A. So the value of cos A, so cos A is equals to base upon hypotenuse. एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो विच इज इक्वल टू AB. AB upon AC, the value of AB is root 7k upon the value of AC is 4k, k will cut, our answer is 7 root 7 by 4. So root 7 by 4 is the value of cos A. Similarly, tan A is equals to perpendicular upon base is equals to, here perpendicular is BC, so BC upon base is AB, which is equals to 3k upon root 7k. Then cut the case, we get 3 by root 7. So the value of cos A is root 7 by 4 and the value of tan A is 3 by root 7. It's clear. Next question, question number 4. Question number 4 is 15 cot A is equals to 8. Find sin A and sec A. Okay, so let's see solution. What is given? It's given 15 cot A is equals to 8. Okay, then cot A is equals to 8 by 15. Okay, transposing, it is in multiplication with cot A, so after transposing it comes in division and it's make a ratio for cot A, which is 8 by 15. Then triangle and put the values. A, B, C are the vertices of triangle ABC and angle A के respect में सारी values देखनी है, so it's perpendicular, hypotenuse never change, and the third one is base. Okay, now cot A is equals to base upon perpendicular. Okay, now the base is AB here upon perpendicular is BC and the ratio is given 8 by 15. So we will write the ratio. The value of AB, so we will take K, okay, as unit. So the AB is 8K whereas BC is 15K. It's getting clear. So that's why I'm not writing here because क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले गिवन थी इसलिए मैंने उसको पहले ही लिख लिया है. ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा. Why? Because ये सारे इक्वल ही मार्क्स तो हैं. Okay, now so AB, the value of AB is 8K now, and BC is 15K. BC is 15K. Again, sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is here, hypotenuse is not here. So first of all, we find the hypotenuse as we done in previous questions. So from this question onwards, अब हम इस क्वेश्चन के बाद से जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अटेम्प्ट नहीं करेंगे. मींस एग्जाम में करेंगे, हम बोर्ड पर नहीं करेंगे. ओके, सो यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आप अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम और देन उसके बाद में हाइपोटेन्यूज फाइंड करिएगा. उसके आगे की बात मैं बताता हूं. ओके, सो 15, 8 and it's become 17 now. Okay, so by Pythagoras theorem, so in triangle ABC by Pythagoras theorem अप्लाई करके हम 17 के लिए आएंगे. AC is equals to 17K. ओके, एंड ये कैसे होगा ये आपको करना है. ओके, कोई प्रॉब्लम होती है अभी अगर पाइथागोरस यूज करने में एंड AC की वैल्यू निकालने में, देन यू हैव टू टेल मी. ओके, नेक्स्ट, so we find the value of sin A. So
Sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is BC here. ओके, एंगल A के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। फोकस सिर्फ परपेंडिकुलर पे करना है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती। इट्स क्लियर। एंगल साइड अपोजिट टू एंगल मींस रिस्पेक्टिव एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू लिखनी है, तो उस रिस्पेक्टिव एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, परपेंडिकुलर ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन थर्ड वन इज ऑटोमेटिक बेस, ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में या दूसरे वर्ड्स में कहें, अपोजिट साइड अपोजिट टू रिप्रेजेंट respective angle, side opposite to respective angle is perpendicular and the side adjacent to respective angle is base. okay, so आपको जैसे अच्छा लगे आप उसको वैसे अपने दिमाग में रखिए, बट रखिए जरूर। now sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse and perpendicular is BC here upon hypotenuse is AC. so the value of BC is 15k upon 17k, k will cut, then our answer is 15 by 17. Then sec A, the value of sec A is equals to hypotenuse upon base. Why? Because sec A is the inverse of cos A. So hypotenuse is AC upon base is AB, which is equals to AC is 17k and AB is 8k. k will cut, so our answer is 17 by 8. so the value of sin A is 15 by 17 and the value of sec A is 17 by 8. okay, अगेन पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, मैंने बोर्ड पे नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में सोल्यूशन में भी ना करें। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर विल डिडक्ट योर मार्क्स। ओके, लेट्स move to the next. So question number 5. Question number 5 is given sec theta is equals to 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. The value of sec theta is given. Then remaining 5 ratios are sine, cos, tan, cosec, cot. Okay. So we find the all other trigonometric ratios. So just see the solution. Solution, what is given? Sec theta is equals to 13 by 12. Okay, now see the figure first. Right angle triangle theta, let's it's be a theta angle A B C. Now sec theta is equals to hypotenuse upon base, which is equals to hypotenuse is here AC, so AC upon base is AB. Is it clear? Adjacent side of the respective angle. Okay, now so the value of AC is 13k and the value of AB is 12k. Okay, so just we mention 12k and 13k. Is it clear? Then if we want to write the ratios of all trigonometric, so side opposite to theta angle is perpendicular and perpendicular is not here, so we find the perpendicular again and again मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम देर से कुछ ना कुछ फाइंड ही कर रहे हैं, या तो परपेंडिकुलर गिवन होता है, बेस दिया होता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज बेस दिया परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया होगा बेस फाइंड करेंगे, मींस तीन साइड्स में दो साइड्स आपको गिवन होंगी और तीसरी हमको फाइंड करनी होगी। सो इन ट्रायंगल A B C, okay, again I'm not going to apply Pythagoras theorem, you will do, आप करना उसको। so BC become 12 13 and 5, okay, it's become 5k, so I'm going to write the ratios directly. In triangle ABC by Pythagoras theorem we get BC is equals to 5k. okay, now so sine A, the value of sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse, which is equals to BC upon hypotenuse is AC. Okay, now BC is 5k upon 13k, k will cut, then 5 by 13 is the ratio of sine A. Similarly
cos A is equals to base upon hypotenuse. Base is AB, AB upon AC, which is equals to 12k upon 13k. Again 13, sorry, k will cut. So the ratio of cos A is 12 by 13. Then tan A is equals to perpendicular upon base. Perpendicular is BC here. So BC upon AB is equals to value of BC is 5k upon the value of AB is 12k. So k will cut. So answer is yes, 5 by 12. Then next, cosec A is equals to, वन मोर थिंग, हम cosec A की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर देन AC अपॉन BC 13 अपॉन 5. ओके, इट्स गेटिंग क्लियर. और वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, आपको यहां से भी मार्क्स मिलेंगे एंड ये भी अच्छा है. So cosec A is equals to 1 by sin A. So 1 by the value of sin A is 5 by 13. So the reciprocal of 5 by 13 is 13 by 5. So cosec A is equals to 13 by 5. Okay, this is also correct. Similarly, cot A. So cot A is equals to 1 by tan A, which is equals to 1 by 5 by 12. So the reciprocal of 5 by 12 is 12 by 5. So the value of cot A is equals to 12 by 5. Okay, these are the other trigonometric ratios except sec theta. Okay, just see the solution, then we will move to the next question. Is it clear? And one more thing I want to discuss here, the value of A I written. Okay, अगर आपने एग्जाम में ऐसा किया तो क्या होगा? यस, इट इज रॉन्ग. व्हाई? वैल्यूज रेशियोज तो आपने बिल्कुल करेक्ट फाइंड किए, बट जब उन्होंने थीटा एंगल दिया था, ओके, देन हम थीटा एंगल ही लिखेंगे. सो सेक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, अगेन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉट थीटा. ओके, अच्छा हुआ ये गलती हुई. ओके, बिकॉज ये पॉइंट भी तो एटलीस्ट क्लियर हुआ ना कि अगर ये इस तरह की गलती अगर हम करते हैं एग्जाम में, सो डेफिनेटली टीचर विल रिड्यूस योर मार्क्स. ओके, जो रिस्पेक्टिव एंगल दिया होगा हम उसी रिस्पेक्टिव एंगल को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन फिनिश करेंगे. ये नहीं होगा कि हम थीटा एंड ए दोनों सेम बात हो गई, यहां पर थीटा एंड ए दोनों सेम बातें हो गई, ठीक है, बट जब थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी थी तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही सारी वैल्यूज देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. ओके, एग्जाम में भी आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So first of all, we draw the triangle A, B and C. But read the question. If angle A and angle B are acute, and जब हमने ट्राइंगल बनाया तो एंगल B क्या हुआ, हमारा राइट एंगल हो गया. ये एक्यूट तो नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम B और C को इंटरचेंज कर देंगे. नाउ B एंड C. अब एंगल A एंड एंगल B दोनों एक्यूट हो गए, कंडीशन पूरी हो गई. Then such that cos A is equals to cos B. So let's see the solution. How to show angle A is equals to angle B. हम एंगल A equals to angle B कैसे शो करेंगे? So solution, cos A is equals to cos B. It's given. Now value of cos A. So एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम cos A की वैल्यू लिखते हैं तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB which is equals to cos B की वैल्यू. सो एंगल B के रिस्पेक्ट में ये बेस बनेगा तो ये हाइपोटेन्यूज, सो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, देन AB एंड AB will cut, AB कट हो जाएगा. सो AC is equals to BC. Now we know the property of isosceles triangle.
in isosceles triangle, if these two sides are equal, then their opposite angles are equal. एंड वाइस वर्सा, अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो यहां पर क्या है, साइड्स इक्वल है, तो उनकी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. सो व्हाट वी मेंशन हियर, एंगल्स opposite to equal sides are equal. Okay, angles opposite to equal sides are equal. So what is the angle opposite to side AC? AC के opposite कौन सा एंगल है? AC के opposite एंगल B है. So एंगल B is equals to, and BC के opposite कौन सा एंगल है? एंगल A है. So angle A is equals to angle B. Hence